Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458. Class 5, Subject English, Chapter 10, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. Now students, take out your book and turn to page number 183. So in the previous lecture we were done with question answers of chapter number 10 and have to start activity 2, question number A. So let us begin with this. A pair of opposite words is given in the brackets against each of the sentences below. So students, you have some sentences and pair of opposite words given against each one of them. A pair, एक जोड़ा of opposite words, विरोधार्थी शब्दों का is given, दिया गया है, in the brackets, नीचे खंडों में, against, सामने, each of the sentences below, नीचे दिए गए वाक्यों में. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ कहा गया है कि आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं आप देख सकते हैं उनमें ऑपोजिट वर्ड्स का एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक दूसरे के विपरीत हैं. तो ऐसे शब्द आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं और आपको इनको इस ब्लैंक में फिल करना है. चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको दोनों में से जो सुटेबल लगे वो चूज करके और इसमें फिल करना है यानी भरना है. So let us start with the first one. Smoking is dash for our health. So it is said that smoking is dash for our health. Our options are useful and harmful. Useful means the thing which gives us something, and harmful means the thing that is most dangerous to our health or injurious to health. Smoking, धूम्रपान, is है dash यूजफुल, जिसका हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में आने जैसी चीज को कहा जाता है यूजफुल. हार्मफुल, खतरनाक. फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए. सो यहाँ कहा गया है कि धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए डैश है. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल्स एंड राइट योर आंसर्स. व्हाट विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स? थिंक useful or harmful? That is harmful. We will write harmful. Students, write HARMFUL, harmful. Smoking is harmful for our health. धूम्रपान हमारी सेहत के लिए हानिकारक या खतरनाक है. Now coming to the second one. Mohan dash his elder brother to help him with his lessons. So here Mohan dash his elder brother to help him in his lessons. Sorry. So here the words are requested and ordered. So let us understand the sentence first. मोहन ने dash his elder brother, अपने बड़े भाई को, to help, मदद करने के लिए, him, उसकी, with his lessons, उसके पाठ की मदद करने के लिए dash. तो यहाँ पर जो dash है उसमें हमें इन दोनों में से एक वर्ड भरना है. requested, विनती की, ordered, आदेश दिया. So मोहन ने अपने भाई को आदेश दिया या विनती की उसके पाठ में मदद करने के लिए. So students, the word will be requested because जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो आप विनती करते हैं, requested होगा. ऑर्डर नहीं कर सकते आप. जब किसी से मदद मांगते हैं you can't order them, you have to request. आपको request ही करना होता है जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं. So it is requested. REQU, write the answer student. REQUESTED, requested. Okay students, are you done with this? Okay, let us move to the third one. Nothing is dash
nothing is dash for a hard worker. So here it is said that nothing is dash for a hard worker. Your options are possible and the other one is impossible. Both are opposite of each other. ये दोनों opposite हैं एक दूसरे के. Nothing, कुछ भी तो नहीं, is है dash for a hard worker, एक मेहनती श्रमिक के लिए, जो मेहनत करता है उसके लिए. हार्ड वर्कर, मेहनती श्रमिक के लिए. कठिन परिश्रम जो करता है उसे हार्ड कहा गया है, कठिन, और वर्कर श्रमिक. सो जो कठिन परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी डैश नहीं है. सो पॉसिबल का मतलब होता है शक्य, इम्पॉसिबल का मतलब होता है अशक्य. यानी पॉसिबल का मतलब है संभव, इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव. सो स्टूडेंट्स, which will be the most appropriate? That is impossible. I am, write your answers. I am, P O double S I B L E, impossible. Your answers are impossible. So written. Okay, nothing is impossible for a hard worker. जो कठिन परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. Okay students, so let us move to the fourth statement. I don't need more milk. So here it is said that I don't need more milk. I, मुझे, do not need, नहीं चाहिए, more, ज्यादा, milk, दूध. So यहाँ कहा गया है मुझे नहीं चाहिए ज्यादा दूध. My glass is already dash. Okay, so here it is said that my glass is already dash. Your options are filled and empty. My glass, मेरा glass, is है already, पहले से ही, dash, filled यानी भरा हुआ, empty यानी खाली. So which one will be the most suitable students? That is filled. मेरा glass पहले से ही भरा हुआ है. F I, write with your pencils, F I double L E D. Students लिखिए F I double L E D, filled, पहले से ही भरा हुआ है. Now coming to the fifth one. We should dash be ready to help the weak students. So here it is said that we should dash be ready to help the weak students. We should, हमें होना चाहिए, dash be ready, तैयार, to help, मदद करने के लिए, the weak students, कमजोर छात्रों को. So your options are never, कभी नहीं, always, हमेशा. So students, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है हमें होना चाहिए डैश, तैयार, कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए. सो यहाँ पर आपका है नेवर, कभी नहीं, या ऑलवेज, हमेशा. सो what will you write students? What will be the most suitable one? That is always. So in the blank write A L W A Y S. Students, आप blank में लिखिए पेंसिल से A L W A Y S, always. Okay students, so we are done with question number A of this activity. So students, you have to learn and write question number A of activity 2 in homework in neat and clean handwriting and send it before 9 o'clock on WhatsApp number 756807. Okay, that is, sorry, 7568077458. स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में अच्छी राइटिंग में करके 9 बजे से पहले व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेज देना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you like the video. Thank you for watching.